and we are all going jumping jumpak watching this cricket का महायुद्ध. देख भाई, या तो विन है या लर्न है. हितेश व्हाट्सएप कर रहा हूँ देख. अबे भाई रुकी जा. मैंने ये क्वेश्चन सनील को ही सोच के बनाया है. अरे नहीं यार, ये आईपीएल ही ऐसा है, इतनी सारी चीजें होती है, कैसे ध्यान रहेगा. Hello guys, welcome back to the Silly Pointer Show. Hi guys, welcome back. So India का त्योहार is well and truly back and we are all going jumping जंपक watching this cricket का महायुद्ध. कोई कैंपेन छोड़ा है मैंने जो पॉपुलर था, जो आईपीएल का, जो इसमें मिला छोड़े भाई. ओजी कैंपेन था भाई, ओजी कैंपेन था वो. अबे ओजी तीन तो मिला. रिटेलिंग कैंपेन. मौका it's मौका for you guys, for Gundu today to win this quiz. Basically we are going to talk about, the quiz is going to talk about the Indian Premier League. देख भाई, या तो विन है या लर्न है. विन है या लर्न है. लास्ट मैच, लास्ट टाइम पे गुंडू को लर्न मिला था. हाँ. गुंडू ने लर्न किया था. और let's see, first round is power play, which will be like a buzzer or a clap, or as we did the last time, we'll say how's that, or out. And you will answer the question. You'll have 30 seconds. The right answer gets a +10, wrong answer gets a -5. Then however many marks you would have earned for that, we will enter into the middle overs, where you will be betting your points. You will, however much you bet, if you answer correctly, +2 of that will get added to your score, and if you answer incorrectly, then that bet will get minus. And it does not have any time limit, but 2-3 मिनट टाइप्स हम रख लेंगे. टू जस्ट ही हो गया. अभी 3 मिनट में नहीं हुआ तो फिर नहीं होगा, मैं ऐसा मानता हूँ. And then we'll enter the slow overs, just some chance to score some quick runs. 15 seconds per question. Very easy, simple questions. Maybe a couple of them a little tricky, but yeah, you will get +15 and -5 for that. And the most important rule is, if you have given an answer, then you have given an answer. There is no going back to Yes, that. sir. Are you guys ready? Yeah. Yes. Always. चलो. So our Chalo. esteemed contestants for today is Mr. Sanil Shekatkar and Mr. Rohan Gundana. As we keep saying, 50+ years of collective cricket watching experience will be put to use today. But today 50 won't be used. Today only 36 will be used. 18 Yeah, 18 each. Because we are going to talk about the IPL. Are you guys ready for the first round, which is power play? Always ready, yeah. चलो. All right, let's go then. First question, here we go. Who scored the second ever century in IPL history Out. after Brendan McCullum? One, yeah. Mike Hussey. Mike Hussey it is. All right. Sanil already in lead. Gundu thinking कि ओए ये कैसा question है? Which player has won the most IPL titles as a player? Out. It was Sanil. Yeah. Tell Sanil. Sharma ji. Which Sharma ji? Rohit Sharma ji. I will cut marks if you don't give full answer. Rohit Sharma it is. यार ये तो पता with था. 6 titles, 1 for DC, which is not Delhi Capitals, and 5 for MI. Come on, Gundu, buck up. Question 3. Here we go. Who was the Purple Cap winner in IPL 2016? He Out. was the winning team member. Yeah. Bhuvneshwar Kumar. Bhuvneshwar Kumar it is. Which team completed the highest successful run chase in IPL history? Out. Yes. पंजाब किंग्स. Yes. Gundu opens his account. Punjab Kings it I is. told you guys. I told you. My vision gets into my brain. Against our team, the esteemed. और मत Kolkata बोल. Knight Your Riders. team बोल. My team बोल. Our team मतलब मैं हाँ. पूरी KKR कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ भाई. अच्छा. तू ज्यादा गुस्सा मत हो भाई. डिफेंडिंग चैंपियंस है मिस. डिफेंड ही करते रह जाओ. All right. Defending. We are going into question number 5. Which player has hit the most sixes in a single Out. IPL season? Out. Mention the season as well. अबे यार. सीजन थोड़ा ट्रिकी होगा. Out. हाँ, पर सनिल ने पहले आउट बोला था, तो हाँ. सनिल के पास. हाँ. क्रिस गेल. 2012. Yeah. Are you sure? Yeah. Chris Gayle, 2012 it is. He hit 59 sixes Crazy. in 2012. How did you say 2012? I want to know your thought process. I remembered the jersey का, मतलब how the jersey looked. तो मैं confused था whether it's 12 or 13. क्योंकि काफी सिमिलर जर्सी थी. हाँ. तो Crazy मैंने भाई, crazy. I wouldn't have gotten the season. Player तो easy था. हाँ. Come on, तो Gundu. पता ही We are at 40-10 right now, but No problem. cricket has Let's seen go. bigger comebacks, so Yeah. don't worry about it.
Question number Yes, 6. sir. Here we go. Who won the IPL Emerging Player Award in 2018? Out. Out. अरे यार. बोल भाई. He has मैं सोच रहा हूँ emerging player award has captained 2 IPL franchises. I might be wrong, but Sanju Samson. -5 for you. Gundu. I think it's Rishabh Pant. Rishabh Pant it is. You get +10. कोई Rishabh Pant won the Emerging Player Award. मैं भाई श्योर नहीं था. संजू सैमसन ने कौन सी अरे हाँ भाई, मेरे को फ्रेंचाइजी. अरे मेरे को लगा कि दिल्ली के लिए एक आध मैच किया हो. You never know. नहीं come on. चलो question number 7. 4 questions to go. Sunil at 35, Gundu at 20. Doesn't look like a long lead, but let's go. Which bowler has the best bowling figures in an IPL match? Is it Mitch McClenaghan? ऐसा कुछ है. McClenaghan. No, wrong. That's not Mitch McClenaghan. Sunil. Oh, what the fuck, bro? कौन है? वैसे 30 seconds हो गए, so Sunil also loses the chance. But give an answer if you had to. Won't be If counted. 2019. No idea. No guesses also. I don't remember. It's Zari Joseph. He has only played, I think, one season only. Oh, yeah, for 6 wickets, no? 6 for 12. Yeah, Oh, he took fuck, 6 for 12 यार. versus SRH in 2019. मुझे अभी भी स्ट्राइक नहीं हो रहा है. So Sunil याद does है. not get any point. But Gundu, shame on you. You get a -5. कंगाली में आटा गीला. You have 15 points. सनिल While को भी एक Sunil has- -5 मिला ना? नहीं, अरे 30 तो- seconds हो गए थे. But मैंने सनिल को नहीं, बोला वो था कि you won't get हाँ मिला ना. पिछले वाले -35 को. हुआ ना. पिछले वाले को. तो 35 पे हो. अपना देख भाई. अपनी तरक्की देख. दूसरों को गिरा मत. I am competitive everywhere. Crab mentality है. हाँ, crab दूसरे को mentality. नीचे खींच के लाओ. Indian mentality. चल क्वेश्चन नंबर 8 बकअप. गुंडू मैं आपको कहूंगा कि आप ऐसे ही बोल दो आउट कि थोड़ा आपको चांस तो मिले, पर उसके माइनस Question का भी नहीं दिख खतरा रहा. है. अभी भी नहीं दिख रहा. नहीं. सनिल तू अपनी आंखें बंद कर ले 2 सेकंड के लिए. अभी तो और एक स्क्रीन है. चलो लेट्स गो. हु फेमसली हिट द विनिंग रन्स इन Out. 23 IPL? Out. Um, Okay, I can go for it. fuck, I forgot. टेल. Jadeja. यस. Oh, हाँ. That do it is 10 CSK runs of जीती. 2 balls. मेरे लिए वो Yes, सीजन sir. काउंट ही नहीं करता ना, क्योंकि सीएसके जीती तो मैं रिबूट कर देता हूँ सिस्टम. तो तूने 5 सीजन तेरे लिए काउंट नहीं करते. हाँ. और 2 सबसे ज्यादा करते हैं, जिसमें राइजिंग टू सुपर जायंट मेरे 2 फेवरेट सीजंस. लास्ट 2 क्वेश्चंस एंड क्वेश्चन नंबर 9. हियर वी गो. Most runs in a single innings या total? नो आईपीएल हिस्ट्री. Total. हाँ टोटल. नहीं, हर ऑल्टरनेट सीजन. Guys, it's David Warner यार. It was an easy one. Who else comes to your mind? डेविड विलियर्स ने कहाँ मारे होंगे इतने रन भाई. डेविड वार्नर has 4,500 तो हैं ही. 4,500 तो हैं ही उसके. मेरे को वार्नर हाँ. लगा, बट मैं श्योर नहीं था इसके आंसर नहीं. ठीक है, कोई नहीं. चलो लास्ट क्वेश्चन. Sunil at 35. Gundu has a chance to make it 35. He's at 25 right now. Question number 10. Very easy. Very easy. So speed is the key here. Here we go. Out. Who played first ball of the first ever IPL match, which was bowled by Praveen Kumar? अबे यार, KKR RCB, KKR के ओपनर कौन थे तब? ओह, ये मुझे पता है. आई थिंक कितनी devious smile दिया करे. ये मुझे पता है. मक्कलम था और एक और कौन था? सौरव गंगुली थे. Come on Gundu, you can do it. चल भाई मक्कलम. अबे यार तो चुप ही हो जाता. इससे अच्छा तो 1 सेकंड बचा था. इट्स -5 गैंगुली. लेके चले गए. पागल. It's Ganguly. गंगुली था क्या? यार, मैं सोच ही रहा था. भाई मुझे अभी भी कौन नॉन स्ट्राइकर में vividly था? याद है. मैं सोच ही रहा था. मैंने Yeah, दोनों But का नाम हितेश, लिया. मेरे को एक बार जरा ये चेक याद करना नहीं आ तो. रहा था. इज इट प्रवीण कुमार और इज इट जहीर खान? बिकॉज आई थिंक इट्स जहीर खान who bowled the first delivery. I think it's Zahir Khan, but there's a famous glitch. First ever ball of the IPL. I think Zahir Khan was bowling, but the visual said Praveen Kumar, so I might have gotten confused with that.
but yeah, I think it's Zahir Khan. क्योंकि वो मेरे को ये भी याद है कि regardless, लेग साइड पे डाला था, आई थिंक थाई पैड पे लगा था. that I also remember. मैंने तो वापस देखा वो मैच, पर I think मैं वो विजुअल पे चले गया. Anyway, guys, we are done with round 1, and we have Sanil at 35 and we have Gundu at 20. Quite a Yeah. low scoring affair, and very less scope, I would say, to bet points in round 2. But that's how it goes. You can bet any number of points, guys. You can bet 1 point also. Yeah. But as you know, how round 2 goes, we'll have 6 categories. You will choose one of those, and you will get a rather longish question in that category, and you have to decode that. Yeah. इसमें 4 questions तो मुझे लगता है very gettable हैं, very easy. 2 can be slightly tricky, but we will see. Sanil, you have the higher points, so you Yeah. get to choose the category. Who am I? ये Who am I हमेशा ये इसको सबसे पहले चाहिए. इसमें हितेश कोई ऐसा है कि अगर सनिल नहीं बोल पाता तो मैं बोल दिया तो मेरे को पॉइंट आया, ऐसा कुछ है इसमें? नहीं, आपको बस शाबाशी मिलेगी. ऐसा है तो नहीं, पर हाँ देखेंगे अगर आप बहुत ज्यादा गरीबी हुई आपको पॉइंट की तो उस समय तो आधा पॉइंट दे देंगे तुमको. कॉल ले लेंगे. हाँ, आधा पॉइंट दे ठीक है. देंगे. I have scored over 40. Let me read. Just Yeah, listen to me. I have scored over 4,900 IPL season and have played for 6 franchises. In 2017 season, I had a strike rate of over 160 and hit more than 21 sixes, taking my team through to the playoffs, but not to the finals. I've been a consistent top order presence, often playing the role of an aggressor in power plays and keeping wickets. I'm a 2-time IPL winning player, winning the orange cap in the earlier of the 2 seasons that he won, basically. In 2022, I was drafted by then 4-time title winning team and was released ahead of the 2023 season. Who am I? 3 minutes start ना. Just started. इसमें negative After है? the question. हाँ, अच्छा, इसमें मतलब तो bet minus कर रहा है 1x, हाँ, ओ सॉरी, हाँ, कितने पॉइंट्स बेट कर रहा है तू? सॉरी, आई फॉरगॉट. 5 points. Okay. 6 franchises. ठीक है. In 2017, I had a striker. I've been a consistent top order presence. 20 seconds to go. माँ, मेरा guess is पार्थिव पटेल, और तो मेरे दिमाग में कोई आ नहीं रहा है. Parthiv Patel is wrong. Yeah. But Gundu, if you had to answer, what would you have answered? डिकॉक है क्या? नहीं. It's Robin Uthappa, guys. Oh. Yeah, दे मेरे दिमाग में नहीं आया. वही प्रॉब्लम है यार. I'll tell you the cues. I'll tell you the Four-time- cues here. I'll tell you the cues. अच्छा, ये In CSK. 2022, there was only one team which was the 4-time title winning. Mumbai was already a title winning. Yeah. So it was CSK. CSK. I know, but मेरे दिमाग में आया ही नहीं रॉबिन उथप्पा. Yeah. Anyway, Sanil at 30, Gundu at 20. Gundu, what? नहीं कुछ. नाम तो सुना ही होगा. How many points? 10. 10 points. Yeah. गुंडू गट्सी तो है भाई. तुझे मन तो करता है तुझे जीतते देखने का. चलो चलो. भाई देखते हैं. I'll read out the question, then I'll start your 3 minutes. ठीक है? Across 15 IPL seasons, or 15 is a trick number, just telling you. 18 मान ले इसको. Only one player has managed this unique feat. He scored 25 or more runs in a single over on 3 different occasions, all against different franchises and all in must-win games. One against KXIP Capitals and once against Rajasthan Royals. In one of those instances, he hit 5 sixes in an over without scoring a 50 in that match. In another, he scored 25 in an over and followed it up by bowling the final over himself, defending 10 runs and taking 2 wickets. Despite all this all-round resume, he never made it to an ICC tournament for his country's national team, T20 national team. Who is this one-man chaos machine?
मेरे दिमाग में तो फट से एक नाम आ रहा है भाई, फट से एक नाम आ रहा है, राहुल तेवाटिया, क्योंकि मेरे को पता है राहुल उसने तेवाटिया इट इज। yes, राहुल तेवाटिया उसने इट इज। उसने अरे क्वार्टरल तो को उसको मारा था उसको पंजाब में। उसको उसको गेस तो करने थे, वो तो अपना सोच नहीं रहा नहीं, था। मेरा गेस वही होता है, पंजाब में शेल्डन क्वार्टरल को मारा था। Yes. वो याद है मेरे को। एक तो आईसीसी टूर्नामेंट्स में उसने इंडिया कभी खेला नहीं उस टाइम पे, तो वो एक था। दूसरा मैं ये याद कर रहा था कि इसने 25 रन और राजस्थान पे कहाँ मारा था, बस वही डाउट था, मगर सारे ही ऐसे पाइल अप होके भाई राहुल तेवाटिया बोल रहा था। biggest clue was in the category name itself. Rahul, the Yeah, famous yeah. dialogue. In lead, he had bet 10 points, so Wait, 20 gets added to wait, his score what at 49. Sanil, it goes to you are at 30. Tell the category and the मुझे लगता points है that you are रेड बॉल स्पेशलिस्ट देखते हैं कैसा होगा। कितने points? 10। 10 points. मैंने ये क्वेश्चन सनील को ही सोच के बनाया है। मतलब मैं जब ये क्वेश्चन बना रहा था, मैं सोच रहा था कि भाई सनील डिकोड करेगा तो मजा आएगा। चलो देखते हैं। मैं पहले एक बार वो बोल देता हूँ क्वेश्चन, देन यू कैन स्टार्ट। In a rather forgettable season for the team, one player delivered against the Mumbai. He's primarily a test specialist for his country, and at that time was playing under the captaincy of one of the non-Indian or English Fab Four batters. But here's the catch. Nearly 30% of his total runs, means total runs in that season, came in that single knock. That innings was hailed as one of the greatest counter-attacking innings in the IPL history. It featured a 100+ strike rate boost, a partnership with an Indian wicketkeeper that came out of nowhere, and a personal score that was 2x, almost 2x, the next best in his team that night. This single performance broke the record of the highest individual score for the franchisee at that point, only to be broken later by his fellow World Cup winning countryman. He was also the player of the tournament in one of the IPL seasons, not necessarily the same one. भाई Who साहब is एक this? भी मेरे को क्लू स्ट्राइक नहीं हुआ है, तो सोचना पड़ेगा। फैब फोर नॉन इंग्लिश, मतलब जो रूट नहीं, कोहली नहीं, इतने टाइम स्टार्ट कर दो। तो स्टीव स्मिथ ही होगा, और तो क्या, स्टीव स्मिथ Kane विलियमसन। स्टीव स्मिथ विलियमसन। He is primarily in a rather forgettable season for the team. One player delivered. 10 seconds to go. यार ये वो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है क्या ऑस्ट्रेलिया का? मेरे को उसकी हैंड्सकॉम्ब, पीटर हैंड्सकॉम्ब, वही मेरे दिमाग में आ रहा था और मुझे याद नहीं है। इनकरेक्ट या करेक्ट? It's incorrect. अच्छा, Gundu, if you had to take a shot, what would you have said? नहीं, पहले मेरे दिमाग में तो ब्रैड हॉग आ जा रहा था, मगर he has not won the player of the tournament, ओ ये तो मेरे दिमाग में नहीं है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था, हैंड्सकॉम्ब तो था ही नहीं। क्या है आंसर? Ben Stokes. He was playing with Steve Smith. He and Joss Butler have won the World Cup together. Joss Butler came and scored the highest individual score for Rajasthan Royals. आसपास भी नहीं था इसके। And I think he was player of the tournament in 2017. एक जगह पे आया था, मगर मेरे को राजस्थान से नहीं, वो पुणे वो क्या बोलते हैं, पुणे वॉरियर्स के लिए नहीं, वो जो पर्पल जर्सी था उनका क्या था नाम, सुपर जायंट्स, पुणे सुपर जायंट्स से कुछ था ना, उसमें भी था ना। तो मैं स्मिथ का वैसे रिलेट कर रहा था का, स्मिथ का वैसे रिलेट दोनों कर जगह रहा था, दोनों बार स्मिथ की कैप्टनसी के अंडर खेला है। तो आई वाज थिंकिंग कि I बेन was way स्टोक्स का off. वो एंगल हो सकता है क्या, मगर हाँ उतना क्लियर नहीं All था। तो मेरे हो right, गए अब 10 interesting पॉइंट। turn of events. नहीं 20 में तूने 30 पे 10 बेट किया था, तो 10 ही माइनस हुए हैं। You are at 20 and Gundu is at 40. Gundu, next गुंडू category. 40 बेट कर दे भाई, जीत जाएगा तू। You are left with caught behind, no cap, no problem, and colossal collapse. Colossal collapse, Colossal collapse for how many points? 5। 5 points. यस सर। अबे तेरे आना ही नहीं चाहिए लीड में तेरे जैसे आदमी को। चिंदी चल। In one of the tensest non-league games in the IPL, a well-set batter nearing his 50 looked poised to close out a modest chase with 7 wickets in hand. But then came a 3-ball sequence.
a top edge 6 that carried barely 62 meters and woke up the bowling side, a direct hit run out by a substitute fielder at the non-striker's end, a mismatched lofted catch to long off by the same set batter that triggered the panic. This all happened in the 17th over with just 37 needed of 21 balls. The batting side still had an Indian great at the crease, but they ended up losing the game. The winning side bowled 5 full-time bowlers with no over from their captain, despite being a part-time off-spinner. Which match is it? Very, very popular match, very famous. ये शायद मेरे को पता है. मेरे को भी खड़क रहा है थोड़ा थोड़ा. चेन्नई मुंबई का मैच हो सकता है. इन वन ऑफ द टेंसेस्ट नॉन लीग मैचेस, मतलब ऑफ स्पिनर दिया है ना इधर. चल भाई, आई एम गोइंग विद MICSK. MICSK is Wrong. अबे but the game that we are talking Yeah. about had the exact MI same result. MI Pune. Yes, MI. ओ राइडू कैच पकड़ता है लास्ट में. Dhoni got अबे run out. यार. Al Pandya did the यार throw. मेरे को लगा ये तो काफी इजी था ये तो. हाँ, बट मैं भी जब क्वेश्चन बना रहा था, मैंने जब क्वेश्चन वापस पढ़ा तो आई आल्सो गॉट कंफ्यूज कि ये तो 2019 फाइनल जैसी काफी सिमिलर स्क्रिप्ट है, पर उसमें कोलैप्स नहीं, कोलैप्स नहीं था. और तूने ग्रेट बोला और फिर वो लास्ट बॉल आई थिंक वॉशिंगटन सुंदर था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, स्ट्राइक पे. Oh, But shit. Gundu eventually turned out to be smart कि उसने 5 पॉइंट लगाए. तो Gundu at 35, Sunil at 20, 2 categories to go, caught behind and no cap, no problem. And Sunil, it's to you now. नो कैप नो प्रॉब्लम, ठीक है. नहीं तो 2 ऑप्शन है ना, नो और एक और रिकॉर्ड बिहाइंड, दोनों में से एक है. Caught behind, no cap, no problem. मैं सोच रहा हूँ मैं बेट कितना करूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा पीछे नहीं आना है कि लास्ट राउंड भी यू नेवर नो मैं कैच कर लिया अगर. 15 ले लेके हाँ टाप के गुंडू के आगे चले जाओ. हाँ. तो गुंडू इज एट 35 वैसे, राइट? Gundu is at 35, you are at 20. 15 डाल. I'll do, and I'm at 20, right? You are at I'll do 10 only. 10 on which category? No cap, no problem. I think as per me, as per me, easiest question of the quiz. अबे Of the quiz. Of the quiz. Of the quiz. Of the quiz, मतलब of the middle overs round. 5 points you have bet on. 10. I have bet 10 points. 10 बोला. 10. Sorry. You will go up to 40 if you win this one. But यार वही IPL चलो. trivia बहुत ही poor है. I'll start the time once I have read the question, ठीक है? But I think you will get it by the time I have ended it. Only 5 uncapped players have scored 500 plus runs in a single IPL season, including a foreigner. In an IPL season that featured 2 teams scoring over 200 in the same match over 13 times, one player, uncapped at the time, quietly racked up over 500 runs without ever hitting a century. He batted at number 3 in most games, finished ahead of both openers in the run charts for his team. Despite this, he wasn't a part of his national squad that played the 2019 World Cup or even the T20s that followed, or even the T20 World Cup that. What's more fascinating is that his strike rate never looked elite on paper. It hovered around 133, but he scored 30 plus in 11 out of the 14 matches, often setting the platform. In hindsight, this was the year that rebooted his career, and even though his name was barely mentioned in the post-match presentations, he went on to become one of the most destructive T20 batters in the world. Only 5 uncapped players have scored 500 runs in a single IPL season. हितेश व्हाट्सएप कर रहा हूँ. अबे भाई रुक ही जा. टाइम कितना बचा है हितेश? 40 seconds. 40 guesses. संजू सैमसन Time होंगे. up. Time up, वैसे, so you won't get a negative. But what's your answer, Gundu? अरे मुंबई का ही है ना फिर.
हाँ मुंबई का ही है, वन डाउन आता था। वन डाउन में कौन आता था? और ईशान भाई किशन है तूने आंसर। ताली बजाई, तुझे समझ आ गया? नहीं, इसने ईशान किशन नहीं कहा। नहीं, मैंने ईशान किशन बोला था, मगर फिर मेरे को जैसे इसने बोला, हाँ सूर्या। Anyway, Sunil at 20, Gundu at 36. और no answer का 10 points। इंडिया आदमी। सही में यार। चलो 10 points on चलो caught behind. Last question of the category. I was named by KKR in its player pool ahead of 2009 season, but I was eventually signed by Kolkata Knight Riders ahead of the 2012 IPL season, but still never played. I debuted in the IPL in 2013. Between 2013 and 15, I was a backup wicketkeeper and rarely got any. In 2017, I played a game-changing knock of 102 against Rising Pune Super Giants, which became a defining moment in my IPL career. Post 2017, I became a permanent part of the 11 and have averaged 40 plus in 2 seasons between 21 and 24. तो मतलब 24 में भी खेल रहा था. I have played for only 2 franchises in my IPL career and have over 4,600 runs with a strike rate close to 140. In the 2021 season, I became the all-time leading run scorer for my franchise. ओके, सो विकेट कीपर, बैकअप विकेट कीपर है। बैकअप विकेट कीपर में अंबती रायडू वाज आल्सो बैकअप विकेट कीपर। रिद्धिमान साहा हो सकता है। कोलकाता के लिए कौन कौन था? Are you thinking Indian or foreigner? I'm thinking Indian only, Okay. Then you should क्योंकि think मैंने foreigner. बट्टा सोचा था। क्या कह रहे हैं? बट्टा सनी क्या कह रहे हैं? Then you थिंक should फॉरेनर think बोल foreigner. रहा। Think corner and think wrong. गुंडू, समय समाप्ति की घोषणा होती है, तो आपको कुछ पॉइंट मिलेंगे तो नहीं, आपके कटेंगे भी नहीं, पर आप अगर गेस करते तो क्या करें? मेरे हिसाब से तो अंबती रायडू ही मेरे दिमाग में आ रहा है, क्योंकि उसको बैकअप के लिए ही लिया था, जितना मेरे को याद आ और रहा सनिल? Saha. It's Sanju Samson, guys. है। It's Sanju. Bullet fair has happened, guys, and Yeah. after a first round lead, the scores are reversed. So reverse. Sanil is at 25, Gundu was at 20. At the end of round 2, Sanil is at 20 and Gundu is at 35. So Gundu, you will go first in the. Yeah. Can I choose who can go first? No. ज्यादा अभी लीड में है तो ज्यादा सवाल मत कर। 15 सेकंड मिलेंगे ठीक है। इसके लिए तुझे, ठीक है? और जवाब देना ही देना है। ओके, Are you ready? नेगेटिव है इसके लिए? हाँ, +15 -5. अच्छा ठीक है, चलो। ठीक है? All right, here we go. आंसर देना ही देना है, टाइम के बाद भी देगा तो भी नेगेटिव होगा। ठीक है भाई, लास्ट 5 सेकंड के वक्त बता दियो। अबे ऊपर टाइमर लगा हुआ है भाई, खुद देख सारी अच्छा मैंने। ठीक है, ओके ओके ओके। चल, who holds the record for the highest individual score in IPL history? नहीं आया अब तक क्वेश्चन नहीं आया। अरे अब आ holds the गया। record हाईएस्ट इंडिविजुअल for the highest? द स्केल। Yeah, this game it is. नेक्स्ट। Who was the youngest player to debut in the IPL? अरे वैभव सूर्यवंशी। No, it is. ये तो बहुत ही इजी था। Who was the first player to score back-to-back IPL centuries? फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर बैक टू बैक आईपीएल सेंचुरीज। पता नहीं, मगर माइकल हसी। Wrong. Shikhar Dhawan. Last question. Who bowled the final over in the 2019 IPL final that MI won by 1 run? अरे मलिंगा भैया। All right, you scored 40 in this, so your final score is 75. Who is the only player to be a part of the 11 in the both 2008 and 23 IPL finals? MSD. Correct. Which player has taken the most wickets in IPL history? Yuzvendra Chahal.
Which team scored the most runs in a single innings in IPL history? पंजाब. Wrong. SRH. Last question. Which franchise did KL Rahul captain in 2020? पंजाब. LSG. 22. अब तो मैं हार ही गया था, तो मैंने दो दिमाग में बोल दिया. well. You end at 40. 30 minus 10. 20 and 20, 40. 40. 20 and 30. 20 नहीं, था ना, नहीं. 30 and 2 minus 5 भी तो आए. अच्छा हाँ वैसे 40. Yes. Yeah. Let me just quickly update the scorecard and एक मुझे लगता है मेरे और गुंडू में ट्राई सीरीज में फिनाले होना चाहिए. सारी मेहनत नहीं करूँगा. एक और फिर- क्वेश्चन है वैसे. Who was the captain in 2009 IPL final for RCB? ये तो पता था. All right, we have a winner. पिछले 18 साल से बेरोजगारी का झंडा लिए जो आदमी घूम रहा है, उसने सारा IPL एटलीस्ट सनिल से तो ज्यादा ही होगा. तो हाँ. Gundu it is. Congratulations Gundu. Finally, it was a game of turnarounds. You were behind again after the first round, but मुझे लगा came इजी back. विन होगा, बट मैंने some गलतियां some करी. tough questions I would say for Sunil, but he still had a chance. Two very Yeah. easy questions he fumbled, yeah. SRH and LSG. I thought you are getting it, but हाँ मेरे दिमाग में जैसे ही आया ना कि ये तो हो जाएगा. margins. All right then, that was the second episode of Baby Over. Whenever it comes out. Chalo, good one guys. Say bye. See you. See you guys in the Tri See you, Series bye. final. Bye-bye. Will you